फिर उसके बाद बताना कि क्या सीख मिली। In a narrow street of an old Indian town, two families lived by side for 40 years. One was Hindu, one was Muslim. Their houses were so close that from one window you could see the other's kitchen. During Eid, biryani crossed the window. During Diwali, sweets crossed back. Their children grew up shouting across the same gap, playing, laughing, fighting, forgiving. Then came an election. The speeches grew louder than the azan and the temple bell combined. A new slogan filled the air: protect your own. One morning, a brick appeared on the window ledge. The next day, a second. By the end of the week, there was a wall, built silently by both families, one brick at a time, each thinking the other had started it. Years passed, the children became adults, they never saw each other again. When an earthquake hit the town, the wall collapsed, and beneath it, rescuers found something strange. Two skeletons sitting opposite each other, hands almost touching, each holding half of a broken teacup. It turned out the fathers, once best friends, had kept meeting secretly through a small hole in the wall for years. They died the night the wall fell. The two people said, "What a tragedy!" But nobody asked who built the wall in the first place. Did you understand? So basically, there were like two skeletons, a skeleton of a friends. So it was like those children's father were there, okay, and they both were holding their hands. दोनों के हाथ में कप का चाय था. So this showed that they were meeting secretly, ठीक है. So people started praising their friendship, but no one questioned कि वो दीवार किसने बनाई थी, ठीक है. At the first place, who built that wall? So what did you understand? Okay. What else? Hmm. And same goes in secularism also. कहाँ से ये चीज शुरुआत हुई, वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड इट आउट, है ना. बट स्टिल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है. कल्चर डिफरेंसेस भी हैं, बट उसके बाद जो हमारी जो वायलेंस की तरफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स, तो दैट्स वेरी हार्श और बहुत क्रुएल्टी की तरफ हो रही है सोसाइटी. सो वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये एग्जैक्टली हुआ कहाँ से था. हम कभी बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने किया था, हम कभी बोलते हैं वेदास में पहले से ही ऑक्यूपेशन की बेसिस पे डिविजन्स है, बट वो दीवार इतनी लंबी कैसे हुई वो कोई समझने की कोशिश नहीं करता है ना. अनदर स्टोरी. There was once a man named Tanmay who lived in a crowded Indian city, one where temple bells, church choirs, and azans all mixed into one sound of life. He was neither very religious nor very political, he was just wanted peace. But one day, riots broke out, the city was burning, and names became death sentences. Which side are you on? They asked him. He didn't know there were sides. As the mob approached his lane, someone whispered, "Say your God's name quickly, it can save you." He panicked. He had a Hindu name but worked in a Muslim shop. He had eaten with Sikhs, prayed once with Christians. He wasn't sure which God he belonged to. So he switched names. One day Raghav, the next day Rahim. Each night he washed the blood of his doorstep, hoping the city would forget. But when peace returned, neither temple nor mosque welcomed him. To the Hindus, he was Rahim the traitor. To the Muslims, Raghav the spy. In the end, he was buried in the no man's land, a small strip between the graveyard and the cremation ground. No God claimed him, no man mourned him. No God claimed him, no man mourned him. Mourning. What did you understand by this? Hmm.
You should have sides. Hmm. What else? Interest domination इतना बढ़ जाता है कि लोग अपनी ह्यूमैनिटी भूल जाते Hmm. हैं बिकॉज उसका जो खाना बना वो सिर्फ स्पिरिचुअल राइट्स जो उसको नहीं है Hmm. इतनी दर्दनाक थी है। रिलीजन एक फ्रंट है बस तो आगे बढ़ाने Religion tells us that how we should live peacefully. ठीक है, बट उसका ऑपोजिट ही हम कर रहे हैं. Now we took religion as a status. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का स्टेटस है. इफ आई एम अ हिंदू दैट आई शुड रिप्रेजेंट हिंदुइज्म. ठीक है, वो मेरा स्टेटस है. बिफोर ह्यूमन बीइंग वी आर रिप्रेजेंटिंग रिलीजन. ठीक है, और रिलीजन के अंदर वी आर लाइक डिवाइडेड इन कम्युनिटीज आल्सो. वो भी रिप्रेजेंट करना है. तो सोचो, एक इंसान पर जो पैदा हुआ है खाने पीने के लिए, उस पर इतनी सारी जिम्मेदारी थोप दी सोसाइटी ने. तो फैमिली का बेस फिर सोसाइटी है. क्योंकि दो दो बच्चे एकदम अलग कैसे हो सकते हैं एक एकदम हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रहा है अपने कास्ट को सपोर्ट कर रहा है और फिर आप उसको नास्तिक बोल दो Okay, now write down distinctive features of Indian secularism. First, rooted in India's diversity and history. Rooted in India's diversity and history. So basically, like Western countries में mono religious है, ठीक है? That only one religion exists there. But India में there are multi religions, ठीक है? So this difference we have to write down. Indian secularism is different from the Western idea because it was shaped by different from the Western idea. Notes तो इस पर लिख लो. Different from the Western idea because it was shaped by India's unique social and historical background. It was shaped by India's unique social and historical background. I forgot your name. आयुषी के पीछे ध्रुव. कैसे निकलेगा ये डर? लोगों के सामने बोलने वाला डर कैसे निकलेगा? आई एम ट्रूली आस्किंग. क्लास के प्रेसिडेंट के लिए थोड़ी ना खड़े हो तुम कि जीत जाऊंगा तो ठीक है. पेपर क्लियर हो जाएगा फिर कैसे करोगे? खड़े कैसे हो गए लोगों के सामने? हैं? सर क्लियर होने से पहले ही आपको ये डर निकालना पड़ेगा. थोड़े ग्राम तो करो आज. कल आओगे नहीं तुम. Because it was shaped by India's unique social and historical background. Write down. Unlike Western countries that were mostly mono-religious. Unlike Western countries that were mostly mono-religious. तो Western countries में mostly Christians होते हैं ना? That were mostly mono-religious. India has always been multi-religious. Multi-religious. Write in next line. India needed a model of secularism. India needed a model of secularism.
that respected all religions equally. That respected all religions equally. During the freedom struggle, during the freedom struggle, leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Maulana Azad. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Maulana Azad emphasized equal respect and support for all religions. Emphasized Jawaharlal Nehru and Maulana Azad emphasized equal respect and support for all religions. तुम में से कोई लिखता है? Poetries, fiction, stories. You what? आप? Nice. That's much better. अब अपने लिए क्या? Nice. और? करवा दे फिर स्टैंड अप कॉमेडी की साथ. और start writing. The more you write there, the more you write here. तुम्हारी आदत नहीं है सोचने की, ठीक है, पढ़ने वढ़ने से ज्यादा नहीं होता है, बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट विल रिफ्लेक्ट कि तुम लोग कैसे सोचते हो. नेक्स्ट, इक्वालिटी विद इन. मैं छपवा. कितने पेजेस की? 250 वर्ड्स. Equality within and between religions. Equality within and between religions. So in this you have to write definition of interreligious जो कल बताई थी and intra-religion. लिखिए. So basically inter-religion is that एक दो रिलीजन होते हैं, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, यहाँ पे हॉलीडेज हमें बराबर मिलती है, दिवाली की मिलती है, ईद की मिलती है. इंट्रा रिलीजन इज दैट विद इन द रिलीजन. हिंदूज में सब डिविजन्स है, ठीक है, फिर उसके बाद मुस्लिम्स में है, तो उनके बीच में जो होता है वो है इंट्रा रिलीजन. राइट इट डाउन. तो बेसिकली इन इंट्रा रिलीजन यू हैव टू राइट कि कैसे जो अनटचेबिलिटी है वो अबॉलिश कर दी गई थी गवर्नमेंट ने, ठीक है, ताकि कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई ना हो, ठीक है. और इंटर रिलीजन में व्हाट यू विल राइट अबाउट द हॉलीडेज, कि कैसे गवर्नमेंट हर त्योहार पे छुट्टियां देती है हर रिलीजन को.
किसने लिखा? What did you write? ठीक है, और किसने लिखा है? हाँ, आर्टिकल 17 ऐड कर सकते हो। अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। So there is this book, अगर टाइम मिले तो read it, The Favored Daughters, ठीक है, it's a like book written by a woman from Afghanistan, तो The Favored Daughter, जब भी टाइम लगे read it। ये जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो women पर ही है। मैम आदमियों पर क्यों नहीं लिखा जाता है? आदमी सुन ले वही बहुत है, पढ़ता क्या है? ओके, ऐड करो, आर्टिकल 17 ऐड कर दो, अनटचेबिलिटी वाला। ऊपर उठाने के लिए, बट अनटचेबिलिटी सूट्स मोर, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। तो रिजर्वेशन इज अ डिबेटेबल टॉपिक, ठीक है, जो अब दो उसमें डिवाइड हो चुका है। तो 17 का डिबेटेबल है, राइट। नेक्स्ट, स्टेट इंटरवेंशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स। स्टेट इंटरवेंशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स। Unlike the Western idea of keeping religion, unlike the Western idea of keeping religion, unlike the Western idea of keeping religion and state, unlike the Western idea of keeping religion and state completely separate, and state completely separate, Indian secularism allows, Indian secularism allows the state to, allows the state to intervene in religion, intervene in religion, but only when, but only when it is done to promote, but only when it is done to promote equality and justice, equality and justice, when it is done to promote equality and justice, but only when it is done to promote equality and justice. Example, the ban of triple talaq, 2017. The abolition of sati and dowry, dowry तो हटा ही दो, the abolition of sati and dowry, and reforms in Hindu marriage, and reforms in Hindu marriage, and inheritance laws, and inheritance laws to ensure gender equality, laws to ensure gender equality. No state religion, next pointer. So basically no state religion means that
There is no religion of a central government. A government cannot intervene, okay, cannot promote any religion for vote banks. Exactly. So Article 25 to 28 सारे religions के बारे में बात करते हैं, ठीक है, that you have personal right to choose religion, वहाँ पे intervene नहीं हो सकता है, ठीक है. So write down, खुद से लिखो ये no state religion वाला 2 लाइन, what it means. नो स्टेट रिलीजन इज कि तुम उसमें इंटरवेन नहीं कर सकते हो, तो नेगेटिव क्या है इसमें? हाँ, फिर तो ये पूरा का पूरा ही नेगेटिव है, सेकुलरिज्म. एग्जाम्पल में लिखना दैट इन आर्टिकल 25 to 28 वी टॉक अबाउट दैट वी कैन चूज एनी रिलीजन वी वांट, ठीक है, फ्री टू चूज एनी रिलीजन, चेंज एनी रिलीजन, ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं कर सकती है. सो राइट ऑल दीज थिंग्स. उसके बाद एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे. क्या आर्टिकल 25 से 28 तक यू कैन राइट दैट यू कैन चूज एनी रिलीजन, यू कैन चूज एनी. उसके बाद हम आर्टिकल एक एक करके पढ़ेंगे. Whenever you are making diagrams, सब whenever you are making diagrams, इतने लंबे लंबे diagrams नहीं बनाने हैं. Diagrams should be very crisp, ठीक है. Diagrams बनाए ही इसलिए जाते हैं so that the examiner can know that you have the idea, और वो देखते ही tick मार दे. अब now I have to stop and read all of these pointers, so this diagram doesn't make sense. ठीक है, नहीं करना. Write one more line. लिख लिया. आयुषी, राइट. क्या लिखा? Indian state knows no religious boundaries. It does not promote nor deny the choice of any individual to follow any particular religion. Article 20 states that government cannot use religion, they cannot promote. नहीं. स्कैनर टेलीग्राम. जल्दी. I'll put the PDFs here. Also I'll keep updated you about the current affairs, ठीक है. तो जो भी current affairs मैं यहाँ पे डालूंगी, make sure that you are reading it and we'll discuss in the class, ठीक है.
we are going to discuss in the class. हाँ डालूंगी, बट फिर भी एक बार एडमिन टीम को भी बता देना, ठीक है? बोल देना कि आप अपडेट कर दो वहाँ पे पोर्टल पर, डू नॉट मेंशन अबाउट दिस, आज दोबारा कर देना. नेक्स्ट राइट डाउन एट द सेम टाइम. At the same time, the government cannot promote or impose any religion. The government cannot promote or impose any religion. उन लोगों ने पहले वाली पीडीएफ भी नहीं डाली है. Okay? Cannot promote or impose any religion. The government cannot promote or impose any religion through public institutions. तो अब तक हमारे आई थिंक 4 टॉपिक कवर हो चुके हैं ना, तो चारों टॉपिक्स के आई थिंक तीन हाँ, तो तीनों टॉपिक्स के आई लाइक अपडेट यू विद आंसर्स आल्सो कि कैसे लिखना है हर एक टॉपिक का, ठीक है? एक एक या दो आंसर अपडेट, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि कैसे लिखना है. टेक्स्ट क्या? हाँ नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से देते हैं सर. The government cannot promote or impose any religion. The government cannot promote or impose any religion through public institutions like कहीं इन्फ्लुएंस कर सकती है या फिर प्रमोट कर सकती है, बट प्राइवेट स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? दे कैन प्रमोट. Then write down next pointer, religion cannot be used for politics. खुद से लिखो इसमें जल्दी, बहुत जल्दी. क्यों? इसमें तो कुछ है ही नहीं दिमाग काम करने वाला कि इंटरवेन नहीं कर सकती है गवर्नमेंट. तो जो भी इलेक्शंस में स्पीचेस वगैरह होती हैं वो प्रमोट करते हैं रिलीजन्स को या फिर वो चीजें भड़काने की कोशिश करते हैं, द वायलेंसेस दे यूज, दे कैन नॉट डू दैट. क्या लिखा? ठीक है. राइट एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट recently reminded political leaders that using religion, Palak, in what pointer are you asking? Political leaders that using religion for electoral gains, violates the representation of the public. Using religion for the electoral gains violates the representation of the public act, violates the representation of people act 1951, that using religion for electoral gains violates the representation of the people act 1951, and the constitutional ideal of secularism,
Last pointer, a balance between faith and freedom. So basically in this you have to write that India secularism is not anti-religion या फिर pro-equality. It just focuses on that one should not dominate other. Okay? There should be no discrimination. There should be balance in the society. Okay, so write down. It believes that all religions have. It believes that all religions have. It believes that all religions have a place in society. A place in society. A place in society. But none should. But none should dominate or harm others. But none should dominate or harm others. Okay. Ladakh जाती है. Start reading that. उसके बाद no word limits. I want an essay type on what you think, and the essay should be like, I feel this. Okay, like that should be your perspective. I don't want current affairs. I want your perspective. ठीक है, पूरा essay चाहिए मुझे. कब तक? आज ट्यूसडे है, फ्राइडे बहुत दूर हो जाएगा. किसने बोला फ्राइडे? कब तक? कल दे दोगे? You have two paper to write. You can give me on Thursday. पेपर कल ही देना. हाँ? क्यों? वो थर्सडे देगी, बाकी कोई भी थर्सडे नहीं देगा, बाकी सब कल दोगे. नहीं, मुझे तुम लोगों को लिखने में प्रॉब्लम होती है. मेरे पास पता है कितने बंडल पड़े हैं अभी चेक करने के लिए. ठीक है, ऑन थर्सडे देन. थर्सडे आप तो सर पेपर दो पहले. ओके, हाँ जी. हाँ, बेसिकली दोबारा अप्रेज कैसे? मुझे समझ नहीं आया क्या बोला. अप्रेज, राइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. At the same, the government cannot promote, impose any religion. कौन सी लाइन है ये? At the same time, the government cannot promote, impose any religion. Or institution you can write. Constitutional provisions regarding secularism in India. Regarding secularism in India. यही हेडिंग है सर. और उसके बाद फ्राइडे को, ठीक है, on like Thursday I'll give you a topic.
You are currently the only person in this conference. Ma'am, you're not audible. Afreen, am I audible now? Yes, ma'am, now you're audible. Okay, Yes, so what ma'am. was the last thing you wrote? Online students. Afreen, what was the last thing you wrote? किसने बोला? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, नहीं कुछ नहीं लगा उसे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज नहीं लिखना है, मैं वो पढ़ रही हूँ, थोड़ा अटेंटिव रहा करो इधर. वो लिखने आते हो तुम लोग बस. Okay, write down Article 25, freedom of religion. Article 25 guarantees. It has right, like everyone has right to freely profess, practice and propagate any religion.
Then write down Article 26. तो ये एग्जांपल नॉर्मल जो 20 बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग जी. Article 26, freedom to manage religious affairs. Freedom to manage religious affairs. It means every religious groups have the right to manage its own religious affairs. Of like religious group have the right to manage its own religious affairs. So basically temple, mosques, church, gurdwara, they can manage their own rituals. Okay, no one will intervene. Right example, the Sikh community can manage their gurdwaras. The Sikh community can manage their gurdwaras through Shiromani, Shiromani, Shiromani Gurdwara, Shiromani, Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee. Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee. In bracket, write down SGPC. Prabandhak Committee. Committee. SCGPC. SGPC, sorry. Next, write down Article 27. Freedom from paying taxes for religious promotions. Freedom from paying taxes for religious promotions. Taxes for religious promotions. तो पता है एक रिलीजन से बहुत सारा टैक्स या फिर बहुत सारा चंदा इकट्ठा होता है, उनसे टैक्स बहुत सारा चंदा इकट्ठा होता है. Now imagine that one religion, any religion, starts like protecting one पार्टी, ठीक है, किसी भी पार्टी को प्रोटेक्टिंग करने लग जाए या फिर उसकी कमेटी फॉलो करने लग जाए, ठीक है, और वो सारा पैसा उस पार्टी की तरफ जा रहा है, तो इमेजिन क्या सिनेरियोज होंगे. है कोई क्या? राइट डाउन आर्टिकल 20. I should start distributing notes. Freedom from paying taxes for religious promotion. Article 27 ensures that no person. Article 27 ensures that no person. हाँ गया. (27) ensures that no person shall be forced to pay taxes. No person shall be forced to pay taxes that are used to promote or maintain any particular religion. That are used to promote or maintain any particular religion. तो क्या समझ में आया? That public money cannot be used for any religious activity. ठीक है, until and unless वो अपनी मर्जी से दिया गया हो, जैसे राम मंदिर में. आर्टिकल 28. Freedom from religious instructions. Freedom from religious instructions in educational institutions. 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 Freedom from religious instructions in educational institutions.
Article 28 says that no religious instruction shall be provided. No religious instruction shall be provided in any educational institution. Provided in any educational institutions wholly funded by the government. In any educational institution wholly or fully funded by the government. Educational institution wholly funded by government. Right, Article 15. No discrimination on religious grounds. So basically it says that you cannot discriminate against any citizen on the basis of caste, race, sex, place of birth. खुद से लिख लोगे? क्यों? Write down. It prohibits the state from discriminating against any citizen on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. Race, caste, sex or place of birth. Article 16, equality of opportunity. Article 16, equality of opportunity. Equality of opportunity in public employment. Equality of opportunity in public employment. It ensures equal opportunity in government jobs. So basically in this, no one can deny like their job on the basis of their religion or any promotion. Bas. Article 29. Yes. Protection of culture and language of minorities. Protection of culture and language of minorities. Protection of culture and language of minorities. Right example. The Constitution allows groups like the Manipuri, or Tamil speakers, to preserve their own language, and cultural traditions. Article 30. Right of minorities. Right of minorities to run educational institutions. Right of minorities to run educational institutions. It gives religious and linguistic minorities the right to establish and manage their own educational institution.
the right to establish and manage their own educational institutions. Right, next, the preamble. Next point of preamble. क्या? कृष्ण, हम मिशनरी स्कूल्स लिख सकते हो, क्रिश्चियन का मदरसा लिख सकते हो, क्रिश्चियंस तो है ना, माइनॉरिटीज में है वो भी। हाँ हाँ लिख सकते हो, मिशनरी स्कूल्स। राइट, preamble declaring India a secular nation. preamble तुम लोग क्यों मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकलवाना चाहते हो? preamble declaring India a secular nation. Declaring India a secular nation. The 42nd Amendment Act 1976. The 42nd Amendment Act 1976. 42nd Amendment Act 1976 officially added the word secular. Officially added the word secular. 1976 officially added the word secular to the preamble of the Indian Constitution. To the preamble of the Indian Constitution. 10 बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, तो अराउंड 15 स्टूडेंट्स आर ओवर है। उसके बाद कल भी आएंगे जो आज नहीं आए, ठीक है। तो जब मैं क्लास में आऊँ, यू विल हैव 10 मिनट्स एग्जैक्टली, और जितने आर्टिकल्स मैंने लिखवाए हैं मेरे आने से पहले नहीं, मेरे आते ही पेन और पेपर खुल जाना चाहिए एंड स्टार्ट राइटिंग दीज, ठीक है। फिर उसके बाद वो पेपर मुझे सबमिट कर देना। नहीं, सिर्फ आर्टिकल्स। एग्जैक्टली 5 मिनट्स यू विल गेट, सिर्फ 5 मिनट, उसमें से एक भी मिस नहीं करना है। तो मेक श्योर कि घर जाके प्रैक्टिस कर लो तुम लोग। आज टाइमर लगा के बैठ जाना, 5 मिनट में सारे आर्टिकल्स लिख जाने चाहिए। एग्जाम्पल्स में इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे। जैसे ही मैं क्लास में एंटर करूँ, स्टार्ट राइटिंग इट, पहले से लिखना नहीं शुरू करूँ। सोवरेनिटी था, चलो हो जाएगा ना कल? नहीं, मैं क्लास में आऊंगी, मुझे बिल्कुल ब्लैंक पेपर चाहिए। तो क्या क्या करना है तुम्हें? कल आर्टिकल्स है और फिर उसके बाद वन होमवर्क आई गिव टू यू। कब देना है वो? थर्सडे। और फिर उसके बाद पेपर यू हैव टू सबमिट। और एडमिन टीम को बोल देना आज पेपर जाके। ऐसे तो आई अपलोड, बट स्टिल वहां पे भी अपलोड होने चाहिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जैसे कनेक्शन होता है ना, दिवाली भी बहुत से बच्चे को लगता है कनेक्शन होता है ना, तो हमें ऑनलाइन बता देते हैं, तो सुनाई नहीं देता, छूट जाता है। तो भी कनेक्ट रहे तब आप बताया जाइए, क्योंकि फिर हम लोग को तो आ जाता है फ्रेंडशिप, उनको नहीं मेरे को कोई यूं मैसेज आया या फिर ना दिवाली आप मुझे से लेकर आधे घंटे का कहाँ मैसेज आया? मेरे को व्हाट्सएप पे आया है कि नोट तो ना हमारा देना शुरू कर दीजिए। नहीं, आपके दिवाली में दर्द है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं यही रहती हूँ। मतलब मैं स्टेज पे कनेक्ट कम करूँगी।